हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता कोठारी एंड आज के सेमिनार में हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग द कॉमन मैन्स वे। ये सेमिनार मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ IAPF अथॉरिटी की, हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और ज्ञान दर्शन टीवी चैनल की। तो आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स के बारे में और फिर हम म्यूचुअल फंड की तरफ अपने डिस्कशन को लेके जाएंगे। तो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में जो सैलरी आती है दोस्तों, उसमें से कुछ पार्ट हम सेव करते हैं फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। तो वो सेविंग्स के वे पैसे हम अपने करेंट अकाउंट में पड़े हुए रहने देते हैं और हर महीना वो अक्यूमुलेट होता रहता है। तो आपके पड़े हुए पैसे आपके करेंट अकाउंट में आते जाएँ और उसको आप वहीं पर अक्यूमुलेट होने रहने दो। तो इससे होता ये है कि क्योंकि हर साल हमारे देश में इन्फ्लेशन रेट होता है जो 4 to 5% रहता है, तो धीरे धीरे आपके पैसे की जो वैल्यू है वो ख़त्म होती जाती है, कम होती जाती है। मान लो कि इसके एग्जांपल देते हैं कि मान लो कि आज आप एक घर देखते हो जो आपको लगता है कि 50 लाख में वो आ जाएगा और आपको लगता है कि 10 साल में आप 50 लाख इकट्ठा कर लोगे। बट जब आप 10 साल बाद उस स्टेज पे आओगे तो आपको दिखेगा कि वो घर आप 50 लाख में नहीं बल्कि 75 लाख में ले पा रहे हो। इसका रीज़न है इन्फ्लेशन। तो इसलिए आपको कम से कम जो आपके सेव किए हुए पैसे हैं वो आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए कि जो देश का इन्फ्लेशन रेट है जो अभी 4 to 5% है, कम से कम आप उससे ज़्यादा कमा पा रहे हो। तो लोग उसको जनरली इंडिया में 3-4 जगह इन्वेस्ट करते हैं। वो उसको सेविंग्स अकाउंट में डाल देते हैं। तो सेविंग्स अकाउंट में आपके पैसे फिर बैंक आपको कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट देती है, या फिर वो फिक्स डिपॉजिट्स ले लेते हैं। तो बैंक आपको वहाँ पे एक लॉक इन पीरियड रहता है, उससे सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफ रेट रहता है उसमें। या फिर वो प्रॉपर्टी ले लेते हैं, रियल एस्टेट में घर ले लिया, ज़मीन ले ली, वो ले लिए, या फिर गोल्ड ले लिया, ज्वेलरी ले ली, उसको ले लिया और उसकी पैसे जब बढ़ेगी, उसकी वैल्यू जब बढ़ेगी तो मुनाफा होगा। या फिर जो आजकल थोड़ा बहुत रिस्क लेने लगे हैं वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा। तो इन्वेस्टमेंट में 2-3 चीज़ें हैं जो आपको अभी से ही ध्यान रखना चाहिए। आज जब आप ये चैनल में आप जब ये देख रहे हो तो इन्वेस्टमेंट एक तो ये कि आपको आज से ही चालू करना चाहिए। जो टाइम जा चुका है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, बट फ्यूचर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लॉन्ग टर्म मोटिव से रखकर अपना इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मोटिव वे इन्वेस्टमेंट के भी आपको लॉन्ग रन में अच्छे रिटर्न्स देते हैं दैन शॉर्ट टर्म, एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म इन नॉर्मल डेज, नॉर्मल टाइम। तो इन्वेस्टमेंट में एक तो यही है कि आपको अपने डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट रखने चाहिए। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट से मेरा क्या मतलब है, ये कि अगर मान लो कि मैंने अपने पूरे पैसे गोल्ड में लगा के रखे हैं और अगर मेरे को उस वक्त लिक्विडिटी चाहिए तो मेरे को आज की डेट में गोल्ड की जो भी वैल्यू है वो बेचकर अपना पैसा रिकवर करना पड़ेगा। अगर गोल्ड की वैल्यू गिरी हुई होगी तो मेरे को ह्यूज लॉसेज हो जाएंगे। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट अगर रखती हूँ तो मैंने कुछ पैसे शेयर्स में लगाए, कुछ गोल्ड में लगाए, कुछ प्रॉपर्टी में लगाए, कुछ फिक्स डिपॉजिट में लगाए। तो ऐसा नहीं होगा कि एक साथ सबकी वैल्यू गिर जाएगी एंड आई एंड अप लूजिंग माई मनी। कहीं कोई एक गिरेगा तो दूसरा मेरे को बचा लेगा। तो इसका मतलब होता है डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट से। ऑल्सो अब इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, कहाँ कहाँ हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। भाई इन्वेस्टमेंट में आप अपना पैसा गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, फिक्स डिपॉजिट्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पोस्टल सेविंग्स, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। वाई टू इन्वेस्ट, वाई डू वी वॉन्ट आर मनी टू इन्वेस्ट? ताकि हम एक स्पेसिफिक गोल, हमारे लाइफ में कोई गोल हो सकता है, उसको अचीव करने के लिए हम अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, या फिर हमारे पड़े हुए पैसे अपनी पैसे और हमें कमा कर दे, तो वो जो आइडल रिसोर्सेज है वो आइडल ना रहे बल्कि वो भी हमें पैसे कमा के दे, उसके लिए हम इन्वेस्ट करते हैं। या फिर कोई इमरजेंसी आ गई कहीं, उसके लिए हम इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स अब कोई भी इन्वेस्टमेंट हम चालू करते हैं तो वो हम कैसे करते हैं? या तो आपने किसी से, अपने दोस्त से सुना होगा, या फिर आप खुद रिसर्च करते हो कि ये इन्वेस्टमेंट में मेरे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ। तो इसमें बेनिफिट तो ये है कि आप जब चाहो खरीद सकते हो, आप जब चाहो बेच सकते हो, आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी लग रहा है कि मीडियम वाला शेयर ले तो वो ले सकते हो, आपको लगता है कि लार्ज कैप कंपनीज वाले शेयर लेना तो वो ले सकते हो। इसमें डिसएडवांटेज ये है कि हमें पता नहीं होता है कि कौन से अंडर वैल्यूड शेयर्स है। कैसे पता करें कि कौन सी कंपनी के शेयर्स अभी अंडर वैल्यूड चल रहे हैं, उसकी नॉलेज लेने में टाइम लगता है। तो ये होगा अगर आप खुद से रिसर्च करके करते हो। देन अगर आप एक रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास जाते हो और आप कहते हो कि ये मेरे 20,000 रुपये हैं जो मेरे को इन्वेस्ट करने, आप बता दो कि कहाँ इन्वेस्ट करूँ, तो इसका एडवांटेज ये है कि इसमें फिर आपको कहीं अपना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आपको बता देगा कि आप यहाँ पैसे लगाओ और यहाँ पैसे मत लगाओ। फिर इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको सिर्फ बताएगा और उसके लिए वो फीस ले लेगा, बट वो जो करना है वो आपको करना है। बाई सेल आपको करना है,
थर्ड ऑप्शन है कि आप म्यूचुअल फंड के वाया अपना पैसा लगा सकते हो, या यहाँ पे ऑलरेडी प्रोफेशनल होते हैं जो डिसाइड करते हैं और जिनके बिहाफ पे जो स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हो वो अपने प्रोफेशनल नॉलेज के हिसाब से आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। आप जब भी शेयर्स की बात करें या फिर आप शेयर ट्रेडिंग की बात करें, शेयर इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो आपके पास 3 अकाउंट होने चाहिए: बैंक अकाउंट, करंट डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में आपके सारे पैसे रहेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट से आप शेयर्स को बाई और सेल कर सकते हो, और जो शेयर्स आप बाई और सेल करते हो वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। बहुत बार हमने टीवी में भी ऐड में देखा है कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, या म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। बट इतना बार सुनने पर भी हमें वो यकीन नहीं होता कि क्या सच में म्यूचुअल फंड सही है। तो मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि वो मेरे लिए सही है या नहीं, जब तक कि मेरे को ये ना पता चले कि वो कैसे काम करता है। तो इसको समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो डायग्राम भी दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे हम और आप जैसे इन्वेस्टर है। से मेरे पास 500 रुपये है, 1000 रुपये, और मेरे जैसे कुछ 100 इन्वेस्टर्स है जिनके पास वो पैसा है पर वो नॉलेज नहीं है या वो टाइम नहीं है जो हम देना चाहते हैं, पर हम चाहते हैं कि कोई हमारे पैसे को लगा दे। तो हम एक फंड हाउस को, एक प्रोफेशनल को हायर करते हैं। मतलब एक प्रोफेशनल को हम अपना पैसा देते हैं कि आप हमारे जगह पे हमारे पैसे को इन्वेस्ट करो। वो प्रोफेशनल बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल गोल वो पैसे को इन्वेस्ट करता है, उसमें से रिटर्न जनरेट करता है, और कुछ पार्ट ऑफ कमीशन अपने पास रखकर वो पैसे वो हम इन्वेस्टर को वापस दे देता है। दिस इज इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज हाउ अ म्यूचुअल फंड वर्क्स। इसमें कौन कौन पार्टी इन्वॉल्व है, इसका स्ट्रक्चर के बारे में समझने में मैंने एक एग्जांपल लिया है जिससे बहुत ही इजीली समझ में आ जाता है कि कौन कौन से पार्टीज इनमें इन्वॉल्व है और वो क्या क्या करती है। जैसे कि कंपनी में प्रमोटर होते हैं जो उस कंपनी को फॉर्म करते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है जिसको स्पॉन्सर चालू करते हैं। तो स्पॉन्सर हो गए, यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया है SBI म्यूचुअल फंड का, उसमें स्पॉन्सर हो गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो वो ट्रस्ट को, मतलब कि कंपनी के केस में कंपनी को फॉर्म हुआ, वहीं पे यहाँ पे म्यूचुअल फंड के केस में ट्रस्ट को फॉर्म किया और उस ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अपॉइंट किया। तो जैसे कंपनी में बोर्ड ऑफ प्रमोटर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को अपॉइंट किया गया। देन वी हैव ट्रस्टी। ट्रस्टी क्या करता है? ट्रस्टी ये देखता है कि म्यूचुअल फंड है वो सेबी और AMFI के रूल्स को ठीक से फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन वी हैव द AMC। AMC होता है असेट मैनेजमेंट कंपनी। उसका काम ये होता है कि इसका काम एक्चुअली बहुत मेजर होता है। ये डिसाइड करता है कि जो फंड के जो पूल ऑफ फंड्स हैं वो कहाँ कहाँ लगेंगे, उस फंड के क्या क्या फंड ऑपरेशंस होने वाले हैं। देन वी हैव कस्टोडियन, जो कि म्यूचुअल फंड के यूनिट्स की देखरेख करता है। तो इन आर एग्जाम्पल HDFC बैंक लिमिटेड इज द कस्टोडियन। देन वी हैव RTA, जो इन्वेस्टर्स की और उनके ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड रखता है। तो अभी तक आपने ये सब बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ा और समझा। अब बात करते हैं कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेजेस जो मैंने आपको पहले भी कहा वो ये कि आपको बहुत कम पैसे में एक इन्वेस्टर का गाइडेंस मिल जाता है। वहीं आप नॉर्मली अगर किसी इन्वेस्टर के पास जाते हो या प्रोफेशनल एडवाइज़र के पास जाते हो और आप उसके कहते हो कि मेरे पास 5000 रुपये हैं, मेरे को आप बताओ कि कहाँ इन्वेस्ट करें, तो वो प्रोफेशनल आपको कहेगा कि भाई मेरी फ़ीस ही 5000 से ज़्यादा है, तो मैं आपको क्या बताऊँ कि कहाँ कहाँ पे वो पैसे को लगाना है। तो वहीं पर आपको जब आप एक म्यूचुअल फंड के पास जाते हो तो वहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि इतने सारे लोग में वो पूल ऑफ फंड डिवाइडेड रहता है, तो जो कमीशन परसेंटेज ऑफ कमीशन है वो ईच इंडिविजुअल के पास बहुत कम हिस्से तक आता है। इसलिए म्यूचुअल फंड के वाया आपको एक प्रोफेशनल मिल जाता है आपके फ़ंड को हैंडल करने के लिए। ये जो एक्सपेंस रेशियो जो कह रहा है, जो कमीशन जो वो प्रोफेशनल हायर रख लेता है, इसको कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको थोड़े से अमाउंट में आपको बहुत डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। मान लो कि आपके पास 2000 रुपये हैं, आप उसको इन्वेस्ट करते हो और अगर कोई बड़ी कंपनी के शेयर्स लेते हो तो उनके शेयर्स ही 20,000 50,000 होते हैं, तो आप वो 2000 में वो शेयर्स नहीं ले सकते हो। हाउएवर अगर आप म्यूचुअल फंड के वाया जाते हो तो क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोगों का पैसा इन्वॉल्व है, तो उनकी ह्यूज थोड़े पैसे करके वो पैसे बहुत ज़्यादा हो गए और फिर उनसे वो शेयर लिए जा सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके 2000 के रुपए जो है वो 50 कंपनीज में डिवाइडेड हो, इतना डाइवर्सिफाइड हो आपका पैसा। तो जितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा उतना रिस्क भी कम रहता है। देन ये टाइम सेविंग है। आप एक बार आपको एक अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम को चूज़ करना है, उसके बाद जो भी बाइंग सेलिंग होगा ऑफ द शेयर्स वो म्यूचुअल फंड स्कीम खुद चूज़ करेगा,
खुद करेगा अपने प्रोफेशनल नॉलेज के हिसाब से। यहाँ पर आपका वो टाइम, आपको टाइम सेव हो जाता है, आपको वो झंझट लेने का ज़रूरत नहीं है। आप इसमें शांति से सोच सकते हो कि ठीक है, अगर शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो वो फंड मैनेजर जो है वो अपना खुद कर लेगा। इसका बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि विथ रेगुलर इन्वेस्टिंग इन SIP आप अपने कोई भी गोल अचीव कर सकते हो लाइफ में। SIP आपको इज़ अ वेरी गुड मीडियम जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड को यूज़ कर सकते हो आपके गोल अचीव करने में। 10 साल में, 5 साल में, 15 साल में आपके जो भी गोल हो, कार का हो, होम का हो, या फिर रिटायरमेंट पर्पस हो, या आगे भी बताऊँगी मैं बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से कि कैसे आप SIP के वाया अपने गोल्स अचीव कर सकते हो। तो अभी तक तो मैंने सब अच्छी बातें बताई, तो क्या इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड में कोई फ्लॉ नहीं है? ऐसा तो भाई किसी चीज़ में नहीं होता है। तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं आपको ये बताऊं कि इसके क्या डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहला ये कि ग्रीड ऑफ द म्यूचुअल फंड कंपनी टू गेन मोर फंड्स। क्या होता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी जब वो चालू होता है तो उसको बहुत सारे लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, और फिर जाकर बहुत प्रोसीजर 2 साल लग जाता है उस लाइसेंस लेने में। तो उनका मोटिव ये हो जाता है कि, और वो जब स्टार्ट भी करते हैं तो उनका मोटिव ये रहता है कि भाई मेरे फंड में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएँ। उनको पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कहाँ से आएंगे? जब वो ज़्यादा ब्रांडिंग होगी, ज़्यादा प्रमोटिंग होगा, ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होगा उसका, तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे उसको उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड कंपनी का, नॉट ऑल, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट ज़्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनी का मोटिव आपको अच्छे रिटर्न देने के बजाय ये रहता है कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा फंड आए। ऐसा वो क्यों चाहेगी? ऐसा इसलिए चाहेगी कि जितना ज़्यादा फंड उस कंपनी पे आएगा, उतना उसका 1 to 2% कमीशन उसके पास रहेगा। तो म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्म जैसा भी करे, अच्छा करे या बुरा करे, इससे उसको ज़्यादा मतलब नहीं है, बट इससे कि जितने ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, तो इसके लिए वो बहुत ब्रांडिंग और ये सब करते हैं। सेकंड, और इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम फंड मैनेजर के हाथ में नहीं है कि वो कब शेयर बाई करे और कब शेयर खरीदे, और कब शेयर बेचे। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी तो ये चाहेगा कि वो सस्ते दाम में शेयर्स खरीदे और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा देर उसको इन्वेस्टेड करके रखे। इसका एग्जांपल लेते हैं कि जब मार्केट क्रैश होता है तो सारे शेयर्स के वैल्यू कम, उसको सस्ते में मिल रहे हैं, तो यहाँ पे वो फंड मैनेजर चाहेगा कि क्योंकि प्राइस कम में मिल रहे हैं तो उसके पास और पैसे आएँ और वो और शेयर्स खरीद पाए। बट क्योंकि मार्केट क्रैश कर रहा है तो आम आदमी पैनिक कर जाता है, उसको लगता है कि यहाँ से अपने पैसे वापस ले लो, और वो रिडेम्पशन के लिए अप्लाई करता है। अब म्यूचुअल फंड के पास वो पैसे कहाँ से आएंगे? वो जो शेयर्स उसने इन्वेस्टमेंट करे हुए हैं उसको वही बेचकर आपके पैसे आपको वापस देने पड़ेंगे। तो जब पब्लिक एट लार्ज इससे पैनिक होकर अपने पैसे मंगाती है, तो म्यूचुअल फंड कंपनी को अपने जो शेयर्स उसने इन्वेस्टमेंट करे हुए होंगे उसको बेचकर आपके पैसे आपको वापस देने पड़ते हैं। तो जहाँ पर वो ऑलरेडी कम सस्ते दाम में चल रहा है, वो चाहता तो ये है कि वो और इसमें इन्वेस्ट करे, बट क्योंकि पब्लिक मतलब जो इन्वेस्टर्स है वो अपने पैसे मांग रहा है, तो उसको वो गिरे हुए वैल्यू पे, सस्ते दाम पे, वो लॉस पे वो शेयर्स बेचकर आपको आपके पैसे देने पड़ते हैं। तो ऐसे में वो म्यूचुअल फंड कंपनी को भी लॉस होता है और आपको भी लॉस होता है। तीसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसके जो फंड का जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंडेंट है ऑन द फंड मैनेजर एंड इट्स रिसर्च टीम। तो अगर कई बार ऐसा क्या होता है कि फंड मैनेजर और उसकी रिसर्च टीम अपना जॉब या फिर अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए वेल नोन या फिर वेल क्लासिफाइड स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करती है, वो रिस्क उतना नहीं लेती है। अगर उनको कोई अच्छे स्टॉक का आइडिया भी है तो भी वो रिस्क नहीं लेते हैं, इस चक्कर में कि कहीं अगर रिस्क ज़्यादा लिया और रिटर्न कम आया, लॉस हो गया, तो क्या उनकी रेपुटेशन चली जाएगी या उनकी जॉब चली जाएगी। तो इस चक्कर में वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। ये हो गया इसका तीसरा डिसएडवांटेज। चौथा ये होता है कि जब आप खुद से इन्वेस्ट करते हो तो आप स्मॉल कैप कंपनी में, मिड कैप कंपनी में, लार्ज कैप कंपनी में, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बट जब आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम के मैंडेट कई बार होता है कि मान लो कि आपने एक ऐसा म्यूचुअल फंड स्कीम चूज़ किया जो मिड कैप कंपनी में लगाता है, तो उसको अगर कहीं पे कोई अपॉर्चुनिटी या कोई आइडिया आया भी है कोई स्मॉल कैप कंपनी या लार्ज कैप कंपनी में, तो भी वो नहीं ले सकता, क्योंकि स्कीम की मैंडेट कई बार ऐसी होती है कि वो मिड कैप कंपनी में ही इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये हो गए उसके डिसएडवांटेजेस। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड की, कि मेरे को कैसे पता चले मेरे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, कैसे पता चले और कैसे उसमें इन्वेस्ट करें। उसको अगर डिवाइड करें तो आप उसको दिखा सकते हैं बाई स्ट्रक्चर के हिसाब से, बाई इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, बाई इन्वेस्टमेंट स्टाइल और बाई इन्वेस्टमेंट मोड। इन सब के बारे में डिटेल में अभी हम आगे पढ़ेंगे।
सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड। कई बार हमें लोग फ़ोन करते हैं और हमें कहते हैं कि मैंने एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया था, बट अब मैं उसके रिडेम्पशन के लिए अप्लाई कर रही हूँ, बट वो रिडेम्पशन रिजेक्ट हो जा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि वो स्कीम में जो आपने इन्वेस्ट किया है वो एक क्लोज्ड एंडेड स्कीम है। क्लोज्ड एंडेड एज द नेम सजेस्ट, ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए रन करता है। तो जब उसका न्यू फंड ऑफर आता है आप तब उसमें अप्लाई कर सकते हो, और फिर उस म्यूचुअल फंड स्कीम की जो भी लिमिट है 3 साल, 5 साल, 7 साल, जनरली इंडिया में इतना ही रहता है वो, तो उस स्कीम में आप उसके पैसे तोड़कर जब आपको लिक्विडिटी चाहिए आप उसको बेच नहीं सकते हो, आपको वो उसमें स्कीम में बने हुए रहना पड़ेगा। हाउएवर ये भी स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड होना कंपलसरी है, बट स्टॉक एक्सचेंज में भी आपको इसके बायर और सेलर इतने आसानी से नहीं मिल पाते हैं। तो आप एक क्लोज्ड एंडेड फंड आप तभी सेलेक्ट करो जब आप श्योर हो कि आपको उस पीरियड में लिक्विडिटी नहीं लगने वाली है। देन वी हैव ओपन एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड एज द नेम सजेस्ट, आप इसमें कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। यहाँ पे कोई फिक्स मैच्योरिटी डेट नहीं है, आपको आज लिक्विडिटी चाहिए आप आज उसको बेचो और आपके पैसे 2 दिन में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। देन वी हैव इंटरवल फंड, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कि वो जनरली तो क्लोज्ड एंडेड फंड ही रहता है बट बिकम्स ओपन एंडेड फॉर सम टाइम। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें कि वो कहाँ पे पैसा लगाएगी। डेथ फंड हो सकता है, इक्विटी फंड हो सकता है और हाइब्रिड फंड हो सकता है। डेट फंड एज द नेम सजेस्ट, वो डेथ इंस्ट्रूमेंट्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में यहाँ पे पैसे लगाएगी। तो क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को पैसा दिया जा रहा है तो यहाँ पे रिस्क कम रहता है और रिटर्न भी कम रहता है। देन वी हैव इक्विटी फंड्स, जैसा कि नेम से ही आपको पता चल रहा है कि ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। जनरली म्यूचुअल फंड से लोगों को लगता है कि ये इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का एक जरिया है, आप स्टॉक मार्केट में इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है। आप म्यूचुअल फंड के वाया आप डेथ में, आप गोल्ड में, आप रियल एस्टेट में और इक्विटी शेयर्स में आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो डिपेंड्स ऑन दैट। तो इक्विटी फंड्स एज द नेम सजेस्ट, वो इक्विटी शेयर्स में पैसे लगाती है। अब इसमें रिस्क कम है या रिस्क ज़्यादा है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप की म्यूचुअल फंड स्कीम को चूज़ कर रहे हो और वो पैसा कहाँ पे लगा रही है। मान लो आप एक लार्ज कैप स्कीम को चूज़ कर रहे हो तो वो टॉप कंपनीज़ में, मतलब मान लो कि निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज में वो अपना पैसा लगा रही है, तो वहाँ पे रिस्क कम रहता है। हाउएवर ग्रोथ रेट भी कम रहता है बट रिस्क कम है वहाँ पे, तो वहाँ पे रिटर्न भी कम रहेगा। और मान लो वो एक स्मॉल कैप कंपनी में लगाती है, ये मिड कैप कंपनी में लगाती है, तो वो कंपनी के पास अभी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स तो बहुत है बट रिस्क भी ज़्यादा है। तो डिपेंड्स कि आप कितना रिस्क और कितना रिस्क आप ले सकते हो, उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। देन वी हैव हाइब्रिड फंड, जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में पैसा लगाती है, डेथ और इक्विटी के कॉम्बिनेशन में पैसा लगाती है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करें तो एक होता है पैसिव फंड और एक होता है एक्टिव फंड। पैसिव फंड एज द नेम सजेस्ट, ये एक मार्केट इंडेक्स को एग्जैक्टली रेप्लिकेट करता है। तो जिस रेशियो में, जिस प्रपोर्शन में मार्केट का सिक्योरिटीज़ है, ये उसी रेशियो में पैसे लगाता है। यहाँ पर कोई भी एक्टिव सिलेक्शन ऑफ स्टॉक नहीं हो रहा है, ये प्री डिसाइडेड है कि मान लो कि अगर वो सेंसेक्स के हिसाब से पैसा लगा रही है, ये निफ्टी के हिसाब से पैसा लगा रही है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50 कंपनीज में जिस रेशियो में है वो उसी रेशियो में पैसा लगाएगी। यहाँ पे क्योंकि कोई एक्टिव सिलेक्शन नहीं है तो यहाँ पे एक्सपेंसेस भी कम रहते हैं। देन वी हैव एक्टिव फंड एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे एक्टिवली डिसीजन मेकिंग हो रहा है किस सिक्योरिटी में, किस सेक्टर में कितने ज़्यादा पैसे लगाए जाए ताकि ज़्यादा रिटर्न आए। यहाँ पर एक्टिव एलोकेशन हो रहा है ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड कैश। ये मार्केट से बेटर भी परफॉर्म कर सकते हैं और मार्केट से वर्स्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट के हिसाब से तो पैसा लगाते ही नहीं हैं। तो दो तरह के इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से आपके फंड्स हो गए। देन वी हैव क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मोड, आप किस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। एक हो गया लमसम इन्वेस्टमेंट, एक होता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट। लमसम वो हो गया कि जब आपके पास, आप एक बिजनेसमैन हो या आपने कुछ पैसे जमा किए हुए हैं, आपके पास एट वन गो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट चूज़ करते हो। देन वी हैव एसआईपी। एसआईपी जब लाया गया था तो वो सैलरीड क्लास लोगों के लिए लाया गया था जिनके पास एक मोमेंट ऑफ टाइम पे इतना पैसा नहीं होता है बट उनके पास स्टैगर्ड इनकम आता है और वो स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आप अपना पीरियड ऑफ कमिटमेंट डिसाइड कर सकते हो, 1 साल, 3 साल, 5 साल। आप अपना इंटरवल डिसाइड कर सकते हो, आपके बैंक अकाउंट से पैसा कब निकल के इन्वेस्ट हो, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, और ऑन द स्पेसिफाइड डेट आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल के उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। तो अगर क्या हुआ, अगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसा ना हो और वो बाउंस हो जाए, तो
तो ऐसे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये चेक बाउंस जैसा नहीं होता है। हाउएवर बैंक इसमें कुछ मैंडेट चार्जेस डिडक्ट करती है। अब तक जो हमने समझा म्यूचुअल फंड के बारे में, ये उसका समरी है कि मेरे को कैसे पता चले कि मेरे लिए कौन सा राइट म्यूचुअल फंड है। हाउ डू आई सेलेक्ट द म्यूचुअल फंड विच इज़ राइट फॉर मी। मेरे लिए सही जो म्यूचुअल फंड होगा आपके लिए कुछ और सही हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स मैंने इसमें जॉट डाउन किए हैं, ये पार्ट 1 है और इसके अगले स्लाइड में पार्ट 2 आएगा। पहले पार्ट में आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपका गोल क्या है, कितने टाइम बाद आपको पैसा वो लगेगा, कितना इंपॉर्टेंट है वो पैसे की रिक्वायरमेंट आपके लिए, कितना रिस्क आप ले सकते हो, क्या हुआ अगर वो पैसे जो आपने इन्वेस्ट किया अगर वो प्लस की जगह माइनस हो जाए तो आप उसका कितना रिस्क ले सकते हो, कितने डिपेंडेंट्स हैं आपकी फैमिली में, कितनी डिपेंडेंसी बढ़ने वाली है फ्यूचर में, कितने अर्निंग मेंबर है। तो ये सब फैक्टर्स हो गए आपके पर्सनल लेवल पे। सेकंड, आप जब कोई म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हो तो ये सब कुछ फैक्टर्स है जो आपको चेक करने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। आप शेयर्स, एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। आप उसमें देख रहे हो कि आपने कुछ पैसे जमा किए या आपको थोड़े सालों में जो पैसे आएंगे आप चाहते हो कि आप उसको इन्वेस्ट करो ताकि एंड में या 10 साल में 15 साल बाद में आपके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाए। तो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लॉन्ग रन के लिए। तो आप जब देखते हो कि कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम आपके लिए सही है, वो भी आपको लॉन्ग रन में देखना चाहिए कि कौन सी स्कीम कितने स्टेबल परफॉर्म कर रही है, कितना कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही है। बट जनरली इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि वो लास्ट 1 साल, 2 साल, 3 साल मैक्सिमम इतना ही वो लास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं। अब आप अगर पिछले 3 सालों की परफॉर्मेंस देखोगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल की, तो वो म्यूचुअल फंड स्कीम भी मजबूर हो जाएगी आपको इन तीनों सालों के लिए ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। तो वो हैवी बेटिंग करेगी, वो हैवी रिस्क लेगी ये दिखाने के लिए कि उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो क्योंकि हमारा मोटिव लॉन्ग टर्म के लिए है तो मेरे को देखना भी यही चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करो आप उसके लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स देखो। ऑल्सो आप पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न मत देखो बल्कि रोलिंग रिटर्न देखो। इसका क्या मतलब है? पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न हो गया कि मान लो कि 2015 से 2020, 2000 तो लास्ट 5 ईयर्स के मैंने अपने डिटेल्स देख लिए। और रोलिंग रिटर्न्स ये हो गए कि मान लो मैंने 8 साल का पीरियड सेलेक्ट किया है, तो उस 8 साल के पीरियड में जितना भी 5 साल का पीरियड आता है उसमें उसने कैसा परफॉर्म किया है। मतलब 2015 से 20 में, 16 से 21 में, 17 से 22 में। तो ऐसे 8 साल की पीरियड में जितना भी 3 साल का 5 साल का गैप आता है उस हर साल में उसने कैसा परफॉर्म किया है, तो ही आई वुड से कि वो कंसिस्टेंट है या वो कंसिस्टेंट नहीं है। अगर कोई एक 5 साल ऑफ लॉट में उसका परफॉर्मेंस अच्छा है वो आप एक मेजर नहीं देख सकते हो कि उसने कैसा परफॉर्म किया या आपको आगे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये हो सकता है कि लास्ट 5 ईयर्स जो आप देख रहे हो उसमें उसकी बेटिंग सही अच्छी हो गई हो और वो लकी रह गया हो। तो आपको हमेशा रोलिंग रिटर्न्स देखने चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए, असेट मैनेजमेंट कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए कि मान लो कि वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास 5 फंड्स है, तो उस 5 में से अगर 2 बेकार परफॉर्म कर रहा है, बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहा है, या फिर 3 बेकार परफॉर्म कर रहा है, सिर्फ 2 अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आई पर्सनली विल नॉट इन्वेस्ट इन सच अ फंड। मेरे को तो ऐसा चाहिए कि 5 में से 4 फंड में उसने अच्छा परफॉर्म किया हो तो मेरे को लगेगा कि वो सही परफॉर्मेंस दे रहा है। दूसरी बात, आप उस फंड की हिस्ट्री देखो। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना बेटर है। क्यों ये बेटर है? जब आपको ये पता चलता है, आप ये देखते हो कि वो 102% वो इसमें इन्वेस्ट कर रही है, या जितना ज़्यादा उसका एक्सपेंस रेशियो, इसका मतलब कि उतना ज़्यादा परसेंटेज वो म्यूचुअल फंड स्कीम अपने पास रख रही है अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए या फिर अपने फंड मैनेजर को देने के लिए। और जितना कम ये एक्सपेंस होगा उतना ज़्यादा आपका पैसा जो है वो मार्केट में लग रहा है। तो लोअर द एक्सपेंस रेशियो द बेटर इट इज़ फॉर यू। देन आप उस पोर्टफोलियो टर्नओवर देखो। मान लो कि लास्ट 5 साल में और या फिर लास्ट 5 साल और उसके 5 साल पहले में बहुत ज़्यादा टर्नओवर हो रहा है, मतलब एवरी ईयर द पोर्टफोलियो इज चेंजिंग अपसाइड डाउन। तो इसमें आई वुड से दैट द म्यूचुअल फंड मैनेजर इज़ नॉट टू श्योर ऑफ व्हाट ही इज़ डूइंग। उसको श्योरिटी नहीं है कि कहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हाउएवर इसमें एक टर्म्स ये भी है कि अगर कोई फंड मैनेजर चेंज हुआ हो तो फिर भी ऐसा पोर्टफोलियो जस्टिफाइड है। तो पोर्टफोलियो टर्नओवर देखने से पहले आपको ये भी देख लेना चाहिए कि वो हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। अब मैं 3 एग्जांपल्स आपको बताती हूँ कि आप अपना कोई भी गोल कैसे अचीव कर सकते हो। तो मैंने पहला गोल लिया है गाड़ी, जो मेरे को चाहिए फॉर एन एग्जांपल 5 लाख की गाड़ी है जो मेरे को 3 साल बाद चाहिए। तो ये क्योंकि 3 साल का पीरियड है तो यहाँ पर मेरे को जो इन्वेस्टमेंट देखने चाहिए वो कम रिस्क के दिखने चाहिए।
जिसमें कम रिस्क हो, रिटर्न भी कम ही आएगा क्योंकि रिस्क कम ले रही हो। तो यहाँ पे आप डेथ फंड में पैसे लगाओ। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो SIP कैलकुलेटर के हिसाब से अगर हम देखें तो मेरे को चाहिए 3 साल बाद 5 लाख रुपए, और अगर मैं डेथ फंड में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मैंने टोटल लिया है, इसे 7% रेट पे मैंने उसको इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो हर महीने आप अगर 13,000 रुपये अपने SIP फंड के वाया आप इन्वेस्ट करते हो तो 3 साल बाद आपको 5 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया है एक घर का, जहाँ पर गोल है घर, अमाउंट हो गया 1 करोड़ और टाइम हो गया 10 साल। तो क्योंकि ये 3 साल से थोड़ा ज़्यादा लंबा पीरियड है, आप यहाँ पे डेथ और इक्विटी के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप अगर ज़्यादा रिस्क ले रहे हो तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप इक्विटी में करो, और अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो तो आप ज़्यादा पैसे डेथ में डालो। और इन SIP कैलकुलेटर के हिसाब से आप अगर 50,000 रुपये हर महीने 10% के रेट के हिसाब से आप 10 सालों तक इन्वेस्ट करते हो तो 10 साल की एंड में आपके पास 1 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे। और तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे है एक गोल्ड रिटायरमेंट पर्पस का, कि मेरे को 30 सालों में 5 करोड़ रुपए चाहिए ताकि मेरे पास रिटायरमेंट के लिए डे टू डे खर्चों के लिए मेरे पास वो पैसे आएँ। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और रिस्क ले सकते हो, आप स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और डेथ फंड्स के कॉम्बिनेशन में पैसा लगा सकते हो ताकि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपका आ जाए। और 12,000 रुपये पर महीने करके अगर आप लगाते हो ऑन एन एवरेज, मैंने एजम्पशन लिया 12.5% रेट आपको मिलता है अगर, तो 30 सालों में आपके पास 5 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे। बट ये तीनों जो है वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, एक्चुअली में ये बहुत सारे फैक्टर्स में डिपेंड करता है जो कि पहले आपको बताया गया था, रिस्क और वो सब को लेकर। तो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। आई होप आप इसके अपने डे टू डे में आप इसको यूज़ करो और आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट करो। तो नमस्कार। क्रिटिकल है बट वी आर ट्राइंग। ये सब हुआ कैसे? एक फोन आया था राजेश के पास, उसने कहा कि उनकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है और उसके लिए उसने बैंक डिटेल्स मांगी। राजेश ने सारी डिटेल्स दे दी। 1 घंटे के अंदर ही उनके बैंक अकाउंट से सारा पैसा साफ हो गया और वो यहाँ आ गए। हार्ट अटैक आया है। देखा आपने, आपकी जरा सी असावधानी क्या कर सकती है। डिजिटल फ्रॉड करने वालों से सावधान रहें। अपनी बैंक डिटेल्स, अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV, OTP, पिन कभी किसी को ना बताएं। सावधान रहें, समझदार बने। IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। हाँ जी सुरेश जी, रिटायरमेंट के बाद जो प्रोविडेंट फंड आएगा उसका क्या करेंगे? कुछ खास प्लान नहीं है, पड़ा रहेगा बैंक में, ब्याज आता रहेगा और क्या। सुरेश जी, बैंक से कितना ब्याज आएगा? एक नई स्कीम बताता हूँ, उसमें पैसे लगा दो, साल भर में दुगने बल्कि चौगुना हो जाएगा। हाँ, बस कुछ नए मेंबर्स बनाने। नहीं सुरेश जी, इन सब फालतू चक्करों में मत पड़िए कि नए मेंबर बनाना, रातों रात करोड़पति बनाना, ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। आप लालच में आकर नहीं, समझदारी से निवेश करें। नए मेंबर बनाओ, वर्ल्ड टूर पे जाओ, कमीशन पाओ या उपहार घर ले जाओ। ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। ऐसी स्कीम्स धोखा हो सकती हैं। IEPF अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
Namaskar, everybody. Welcome to today's show. And today's topic is about the portfolio management strategies for the retail investors. So, before starting today's topic, मैं आप सबसे एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहूँगी और इस क्वेश्चन के लिए है कि अगर हम बात करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ या इंडिविजुअल पोर्टफोलियो की, तो आप सबके ही माइंड में उसको देखकर क्या क्वेश्चन आता है? आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ़ यू विल टेक सम टाइम और आपको ऐसा लगेगा कि इसका हमें आंसर क्या देना चाहिए। तो इसलिए ये दिखाता है कि आप लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए या आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए समझने की एक बहुत इसमें आवश्यकता है। आज का टॉपिक जो है हम लोग उसमें कवर करने वाले हैं अपना इक्विटी, फिक्स्ड इनकम एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। इट विल ऑल्सो इंक्लूड रिगार्डिंग द डेट्स एंड देन हमारे पास होगा पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, इंश्योरेंस प्लानिंग एंड रिटायरमेंट प्लानिंग। बेसिकली व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट? अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट इज़ अ कमिटमेंट ऑफ फंड्स टुडे विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग सम रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम एक कोई भी अपना मनी दैट वी हैव अर्नड, आज हम एक जगह अगर इन्वेस्ट करते हैं एंड वी एक्सपेक्ट दैट वी हैव टू अर्न सम रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज़ व्हाट वी कॉल इट एज इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टमेंट है, करंट कमिटमेंट होती है जो आज के पीरियड पे हम करते हैं एंड वी एक्सपेक्ट कि हमें एक उस पर रिटर्न आए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विच मे बी 5 years 10 years and beyond that, and that will compensate the investors for the time for which the times funds have been committed. एक उसमें what is the expected rate of inflation that the investor is expecting and what is the uncertainty of the future payments. कि कितने टाइम पीरियड के लिए, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हमने अपने जो इन्वेस्टमेंट है, जो फंड्स है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। एक वो बहुत बड़ा सोर्स है कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट और किस सोर्स में करना चाहिए। एंड आफ्टर दैट व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मार्केट में हमारा इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, वो देखकर भी हम अपने आगे के फ्यूचर के फाइनेंशियल प्लानिंग के डिसीजंस जो है वो लेते हैं। देन अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर पेमेंट्स। व्हाट इज़ अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी इज़ कोई भी आगे हमारी पॉलिसीज़ के लिए और फाइनेंशियल कंडीशंस क्या होती है उसको देखकर आज हमें एक डिसाइड करना होता है कि दैट व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट वी नीड टू डू टुडे। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टर्स? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टर इंक्लूड टू मूव मनी फ्रॉम द प्रेजेंट। आज हमारे पास किस हालात में हमारे पास मनी है और हम उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग सम गोल्स दैट वी हैव डिसाइडेड फॉर आवर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। एंड उस प्रोसेस में एक हम एक्सपेक्ट करते हैं टू अर्न अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटर्न फॉर बेयरिंग द इन्फ्लेशन एंड द रिस्क। इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने से पहले कई सारे अपने रिस्क जो होते हैं वो कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं जो इन्वेस्टर अपने माइंड में रखता है बिफोर इन्वेस्टिंग, विच इंक्लूड्स liquidity, age, need of regular income, time horizon, risk tolerance, and the taxability. What is liquidity? Liquidity is if we are investing a percentage of fund in some sources and we need money today. So what is the amount, what is the chances that it will be available today in hand? So this is basically what is meant by liquidity. What is the age of investor? अगर there are investors who are investing at the age of 20, there are investors who are investing at the age of 50. So what is the age? What is our age so that we should start thinking about the investment decision? It is one of the major constraints that an investor is having. The next important point that we have is need of regular income. Like what is our requirement? हम कितने टाइम में अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं and उसके बाद हमें कितना अपना रेगुलर इनकम की रिक्वायरमेंट है, टाइम फ्रेम हमारे पास कितना है, व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम दैट वी आर एक्सपेक्टिंग, हमारा रिस्क टॉलरेंस क्या है। कई इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एक ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार होते हैं। दे आर सर्टेन इन्वेस्टर हु डोंट वांट टू टेक रिस्क एट ऑल। सो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉइंट दैट इज़ टू बी कंसिडर्ड वाइल मेकिंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। आफ्टर दैट लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी आर हैविंग अ पॉइंट ऑफ टैक्सेबिलिटी। हर इन्वेस्टमेंट के सोर्स का उसमें जो इंटरेस्ट इनकम आती है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेबिलिटीज दैट आर एप्लीकेबल टू दोज सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. So before taking any kind of investment decision, we should consider what is the taxability factor for that. For example,
अगर हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स फ्री होता है. एंड सिमिलरली इफ़ वी टॉक अबाउट अदर सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइक इक्विटी, debt, so there are the different kind of provisions of taxability for these sources of investments. So there are basically 5 building blocks that an investor should keep in mind before starting investment, and these different kind of things should be taken into consideration, like income. What is your income? What are you earnings? If you have borrowed any kind of money from any other financial institution or sources, which is called the borrowings, then we have what is our spending, then what are the expectations. So these are the certain 5 building blocks then one should keep in mind before taking any kind of investment decisions. Then why one should invest? What are the various factors that one should consider before investing? First of all, investment increases your income. Investment provides you a extra income, which you can say it as an passive income in addition to what you are currently earning. Investment reduces your tax liability. Various kind of tax rebates are available on different sources of investment. Like again, for PPF, you will get a deduction under Section 80C of the income tax. And the next thing that why one should invest is to fight inflation. What is inflation? Inflation is basically something which reduces our purchasing power. The increase in day-to-day expenses and due to the various factors, due to the economic conditions that are prevailing, जिसकी वजह से हमारा सपोज़ करते हैं कि आज हमारे पास 100 रुपये है और 100 रुपये में जो हम चीज़ खरीद सकते हैं, दैट डजंट नेसेसरली मीन्स कि आने वाले 1 साल या 2 साल के बाद भी हम सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज 100 रुपये में परचेज़ कर सकते हैं, बिकॉज this is the inflation factor that the things are getting expensive. So it is very necessary to take investment, to make investment decision, ताकि हम अपने जो cost है, अपनी जो हमारी inflation है, उसको fight कर पाए. Next, it also increases our savings. Savings, as we all know, are a very important part for anybody's life. So it can be used in any kind of uncertain situations or anything. So savings are the most important things, and it is one of the most important reason that why should one be investing. So one should not save one should not consider, or one should not save after considering that this is the amount of income that one is earning and this is my expenditure, and the remaining amount that is remaining after the expenditure I will be saving. But one should consider that this is the amount I am expected to save to accomplish my future goal, and accordingly one should consider their expenditure according to the amount of saving that they are expected to make. If we talk about the equity, fixed income and alternative investments, then investments are generally into categories. There are various kind of categories in which investment can be classified, and within each category there are many different type of investments. So as an investor, you have to decide that on which investment category you want to invest in and which category will serve your investment objective quite well. So there are multiple options that are available in the market, but ultimately it's your decision according to you. What is a financial security? A financial security is an instrument that is representing some type of financial value, which is both fungible and tradable. The entity that issues the security as financial security is known as the issuer, and the buyer, the investor, will buy these financial securities to make their investments. And the different kind of financial securities will differ on the basis of their risk and the return characteristics. So financial security is an instrument, and for the various kind of examples of financial security can be equity, the stocks, the debts. These are the various kind of financial securities that are available in the market. So the different kind of financial security can differ on the basis of their risk and the return characteristics. There are basically two broad categories of financial securities, and these are the debt fixed return, the debt which is having the fixed return and lower risk rate.
and in comparison to debt, we are having equity, which is having variable return and higher risk. So equity is basically in equity, if you are in the market and you want to invest in financial security, equity is a good option. Equities give you the controlling and the ownership rights in a company, and in this market rate effects. So the risk accordingly in the equity is more as compared to the debt. Debt is having the fixed income, and but the risk is also less in debt. Accordingly, if there is an investor who is going to take who is ready to take the high amount of risk, he can definitely invest in equity. And if someone is low or risk averse investor, or is ready to take moderate risk, then debt is a good option for that. So there are the basic facts that we should consider before investing. Like, some investments can be in the form of securities, while some investment and the other investment can be in the non-security form of investment. What is non-security form of investment? The non-security investments are those financial are not non-financial securities that which cannot be traded in the market. Like, we are having jewelry is there, and we are having antiques or fine art is there. So this is also in form of non-security investment. And the second point is, investing in financial security is different from investing in real estate. So financial security is definitely different from what we are expecting from real estates in terms of both risk as well as the return. So it is very important before taking any kind of investing decision to understand the relationship between the risk and the return of the security. There are certain securities in the market which are free from risk. Like there are government bonds in which there is a fixed income and there is no risk. So according to the nature of the investor, if an investor is going to take high risk, and if an investor is a risk averse investor, so they can definitely prefer to go for risk-free securities. And accordingly, if we are expecting high amount of return, then we should be, and as a investor, we should be ready to take a high amount of risk. So in more than if there are certain like high risk securities, medium risk securities, and low risk securities in the market, and accordingly the return will also variate and fluctuate depending on the nature of the securities that we are ready to take. So what is an asset class? Before taking any kind of investment decision, we need to decide what is an asset class. Asset class is basically a family of investments with similar features, like they're having certain similar feature. They are having risks, the returns, liquidity is there, tenure is again something, taxation, market volatility is there, which is as per the prevailing economic scenario, investors' rights, etc. It serves as a specific objective in the investor's portfolio. So different kind of asset classes are, cash is one of the asset class, stocks are there, then bonds are there, commodities are there, real estate is there, jewelry is there. So these are the kind of asset classes which an investor can consider before making any kind of investment decision. So each asset class is usually governed under the same laws and regulation, and the asset classes contain financial security which behaves similarly to one another in the marketplaces. Another important feature that needs to be considered while taking any kind of portfolio management decisions is allocation of assets. It has been generally observed that a successful portfolio depends basically on the allocation of assets and not in which securities the investment has been made. So it is very important to identify in which class of assets allocation of funds are to be made. And we all must have heard to the statement that do not ever put all your investment in a single bucket. So to have it is important to have a diversified bucket of investment, which also helps in diversification of risk.
For example, do not put all your money in real estate, or do not put all your money in financial securities, or do not put all your savings or all your investments in any kind of particular scheme. So always have a diversified portfolio to take the maximum return and the advantage of all the available asset classes. Asset allocation also involves dividing an investment portfolio among different assets and categories such as stock, bonds, cash. The process of determining the mix of the asset is to hold your portfolio in a very personal one, and which is according to the amount of risk and the return that an investor is ready to take. So the asset allocation that works best for you at any given point of time in your life will depend largely on your time horizon and your ability to tolerate the risk. Asset allocation is considered as the most important decision that an investor must take. And the key determinant of investment outcome is not the selection of individual securities, but the allocation of funds among the various asset classes. So, there are various approaches to asset allocation. The first approach is strategic asset allocation. Strategic allocation heavily relies on the diversification to limit the risk and seeks to improve the returns. इसमें investment is basically based on the expected rate of return for each class of asset. The next allocation strategy that we have is the dynamic asset allocation, which regularly adjusts the combination of asset an individual has invested in the market on the basis of the scenario that is happening in the market. The next approach we have is the integrated asset allocation approach. This approach basically considers the factors which is like individual's economic expectation, what is his or her the capacity of tolerating the risk. Unlike the other strategies, integrated asset allocation strategies considers the investor's risk appetite. So in this particular asset allocation strategy, the risk appetite is most important thing which is considered. The next is the insured asset allocation. It requires establishing a floor value for portfolio return, and active management is carried out till the portfolio achieves return above this base. So next we are having what are the various financial investments and the risk. So generally risk level has been identified into three kinds: the aggressive one, the moderate one, and the conservative one. So if an investor is risk aggressive, the investor would like to basically invest in the equity. This is called the aggressive investment strategy, and mostly in that particular approach, the amount of asset allocation, the maximum weightage would be given to the equity, because in this return is also higher as compared to other sources of investment. And for a risk conservative or for a risk averse investor, the bank's fixed deposits and the other government deposits are the best source of investment, because at that in those particular sources of investment, the amount of risk is very low. Then for the investors who are risk moderate, so there are other options also, like there are medium risk securities, and there are investment linked insurance options also, there are corporate bonds, asset backed securities, etc. So they have a good amount of return along with less or the moderate kind of risk as compared to the equities or as compared to other high risk securities. So there are some kind of key features for investing management. First is magic of compounding. So what is compounding? Compounding is a concept in which money is expected to multiply, and that multiplication is called compounding. Suppose if we assume that there is an investor X, and investor X starts investing at the age of 30, and he or she invests at the rate of 10%. Then at the time of retirement, or at the time of attaining 60 years of age, the investor would be having approximately 1.1 CR balance,
as a 1.1 CR corpus fund, which is because of compounding. In compounding, the interest which is received on a basic or principal investment is again added, and then the interest is calculated on that. So this is generally called the eighth wonder of the world, and this is the magic that the compounding have on the investment. The next key feature of investment management is variability of interest rates. Again, the interest rate varies in each kind of investment. So this is a feature that one should know while taking any kind of investment decision. Then long-term equities, they generally have long-term return. Then impact of inflation, as we have already discussed, that the impact of inflation should be considered while taking such kind of decisions. Another point is a risk-return trade-off. The higher the amount of risk, the higher the amount of return, and the lower the amount of risk that one investor is going to take, the less would be the amount of return that can be expected from that particular security. So there are other major types of alternative investments, and these are commodities, that is the physical material or the natural resources, and the precious and the industrial material that one is interested in investing in. Then the collectible items, like the tangible items whose value increases over a period of time, like books are there, stamps are there, jewelry is there, coin is there, etc. Real estate, which will include the physical property and the raw land. Then we have private equity, investments which are not publicly traded, and which include limited partnership is there, private company is there, stocks are there, hedge funds are there, debts are there. Then we have derivatives also. Derivatives are the assets, or derivatives is a contract between two parties which is built on a purpose of speculation, and which defines, or which has attains its value from any kind of asset which is underlying. So there can be future options as well. Swaps are also there. Next, we will talk about the individual investors' life cycle. So, according to the age at which an investor is, the needs or the requirements are different. So, there is a life cycle of an investor. Like at the age of 25, there are long-term goals like retirement, children's education, and there are short-term goals as well, like buying a car. Planning is very important. Setting goal is very important to complete or to make true your wishes. For investors who have knowledge and time to analyze individual investments, direct investing is a very good option, which requires having an online trading account. Bigger sum of money are needed to get good diversification. The services of a trained financial planner or a broker house can also be taken for such kind of investors. For investors who have big sums of money, but they lack some kind of knowledge or time that how to analyze that particular investment, portfolio management services are available, but the minimum investment in portfolio management services is rupees 50 lakhs or more cost that can be taken. So I hope that today's session is really would be helpful for all the retail investors who are going to take future financial decision or future investment decisions. And I really hope that it will provide you insights that how to take financial decisions. So 6-step processes to personal financial planning are: first of all, assess your current financial situation, then develop your financial planning goals, and accordingly you should start investing. You can also review and revise your financial plans based on the life changing situations. So review is always an important part of any kind of decision. So once you decide that this is the investment plan, you should definitely review it for as per the needs and the strategies that you would be developing for your future requirements. So an appropriate investment portfolio can be designed only after developing a risk profile of the investor, and
and investment of the investor's risk category. Investors' risk assessment forms the basis for portfolio allocation, which is also referred to as the portfolio composition or simply the investing mix. So there are certain asset allocation which is as per the risk criteria or risk index that an investor is going to take. And one of the main factor or way of distinguishing between the class of asset is income and the growth. So I would like to thank you all of you for attending to today's session. Thank you. Are you a fresh graduate? Do you want to fulfill your educational aspiration by pursuing higher education in various interdisciplinary and multidisciplinary areas like environmental science, environment and occupational health, philosophy, sustainability science, folklore and culture studies? If yes, the School of Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies offers various programs like Master's Program, Graduate Program, Postgraduate Diploma, Certificate and Appreciation Program. The school offers 5 Master's Program. Master of Science, Environmental Science. The eligibility criteria for MSc Environmental Science is Graduate in Science, BTech, BE, Agriculture Graduate, Forestry Graduate and Veterinary Graduate. School also offers Masters in Environment and Occupational Health, Masters in Sustainability Science, Masters in Philosophy and Masters in Folklore and Culture Studies. The eligibility criteria for these 4 Masters program is graduate in any discipline. The school also offers various socially relevant and need-based PG Diploma program like PG Diploma in Sustainability Science, PG Diploma in Environment and Occupational Health, PG Diploma in Folklore and Culture Studies and PG Diploma in Migration and Diaspora Studies. The school also offers PG Certificate in Climate Change and Avshist Prabandhan mein Praman Patra. The school also offers 2 doctoral programs, PhD in Environmental Science and PhD in Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies. The school offers various innovative technologies and multimedia for providing a very excellent student support system. The study material is of high quality. The learner support is provided through Gyan Darshan, Gyan Vani, IRC, Swayam Prabha and Swayam channel of IGNOU. For more detail, please log in to IGNOU website. For online admission in these programs, visit school site and also the Samarth online education portal of IGNOU. So please join these programs and fulfill your educational aspiration. We wear clothes on a daily basis. But have we ever wondered, where do our clothes come from? Who makes our clothing? And who are the people and the process responsible for the whole manufacturing of our clothing? If you want to know more about this, Indira Gandhi National Open University from the School of Continuing Education has launched a program which is Certificate in Apparel Merchandising.
There are many benefits after doing this program. You can become a designer in various fields. It can be fashion designer, apparel designer, costume designer, or even a textile designer. One can also work as a fashion consultant. Research and development is another field which one can take up after doing this certificate course. Going into academics is another perk after doing this program. Getting into fashion houses or fashion studios as an intern is also a very good option post doing the certificate in apparel merchandising. The basic eligibility of the program is 10+2. The duration of the program is 6 months to 2 years. The program is also available for both the admission cycles, which is July and January. The exams are conducted twice a year, in June and December. So what are you waiting for? Join this program and get an enriching knowledge in the field of apparel merchandising. And to do so, you can log on to the official website of the university, www.ignou.ac.in. Hello viewers and learners of the Postgraduate Diploma in Environmental and Occupational Health and Master of Arts in Environmental and Occupational Health. Welcome to this session. Today we will discuss on the topic droughts. This forms a part of the course MEV 002 Environmental and Occupational Hazards. Along with me, we have in our studio with us Professor R. Bhaskar. Welcome to the studio. From the School of Sciences and the discipline of Geology. Now, since 1900, more than 11 million people have suffered and have died and have been affected by the droughts. So, droughts can have drastic and long-term effects on the vegetation, on the ecology of a region. They can have environmental impacts on the human health, and it can also lead to famine. Now, these are the second costliest events of the extreme events after the hurricanes. Unlike other extreme events, like for example, they could be the tornadoes or the thunderstorms or even the hurricanes, but it is very difficult to pinpoint the exact start of a drought and when it is actually ended. So the longer the drought lasts, the greater will be the impacts on the people and also on the environment. To learn more about the droughts, Professor Bhaskar, can you explain to our viewers the definition of a drought, then the stages and the types of the drought, and what are the causes, and with maybe some examples, if you can explain to our learners about the droughts. Dr. Sushmita, you have rightly explained. You never know when a drought starts and when it ends. If you ask definition of drought, that means there is for a certain period of time, there is less precipitation than the average. When this keeps on occurring, it results in drought. Drought is an hazard which is a slow kind of hazard. It's a slow onset hazard and it can occur for months or years together. And these heat waves, what you are seeing now today,
is also responsible for increasing this drought which is occurring. Now, if you also see that this is not a rapid one like earthquake or tsunami, it takes a long time. As Dr. Sushmita mentioned, we really don't know exactly when it starts, and in real sense, we don't know when it ends. What we see is that the rainfall keeps on decreasing. There are different stages of drought, and there are several causes. Of course, these are natural phenomena also, but human activities can also accelerate the impacts of the droughts. Now, if you see from 1970s onwards to up to 2012, we lost around 680,000 lives in Africa because of the droughts in 83 and 84. So you can see how much death is there. And as Dr. Sushmita mentioned, this is one of the second kind of hazard in terms of the economic loss. And let me tell you, learners, that this droughts is going to affect the achieving of all the sustainable development goals, because the first goal, bedrock of goal, is to remove poverty. And you know, droughts affect the agriculture and this affects the food security. So we will be derailed in all the achieving sustainable development goals if we do not take care. Now, the second aspect you should know is that since 2000, 29% there has been increase in the amount of droughts compared to the past 2 decades. Already 2.3 billion people do not have access to water. If you see the UNICEF report, by 2040, 1 in 4 child will be having water stress. So what you can see is that drought is not a simple mechanism of just drying up. Also, what you are seeing is that this will cause loss to the environment, and sometimes you can have this zoonotic diseases, pathogens which can cross once the barriers are broken, because environment is damaged, the barriers are broken, and then you can have the spread, the jump from animal to human kind of diseases. So this is quite complex. Now, if you go to the next slide, you will see when does drought occur. Now, if you see this, you can see the definition is when there is a noticeable deficit in water supply or rains for extended periods, a drought occurs. This extended period may be days, may be weeks, may be months. In some cases, it can be decades. We have had history in which for more than a decade, there was drought. If you see in parts of Africa, you had the drought and there was mass migration, starvation, cattle dying, all these things. Of course, these are accelerated by even the war-like conditions, and this also results in disturbance in the society because of this. So when do we term a region to be drought affected? A region is termed drought affected when it receives consistent below average precipitation. So this is the definition which is given. So we have more rain in a particular place, flood. Less rain, it can be drought. It can be normal compared to the average statistics, or it can be below normal or scanty. So these are the classifications which are given. There are several stages of drought. If you see the slides, you can see the droughts are divided into 3 critical stages before their ultimate meteorological drought. Now, this is because the precipitation is less in a given area, and this precedes all kind of drought. Now, this, if you understand the water cycle, if you understand the connections between hydrosphere, atmosphere, biosphere and lithosphere, what you will see when the rainfall is less, obviously you will see the soil moisture will be less. Obviously, you will see the water accumulating in the reservoirs will be less, and this is a chain of events. So the first one is the meteorological drought. The second one is the agricultural drought. Now, what is agricultural drought? Crop production is affected. Why this occurs? Because there is no water, the soil moisture gets dried up, and this water is so much less that plants cannot survive and livestock cannot survive. So this results in agricultural drought. The next stage is the hydrological drought. Now that means the water in the reservoirs, lakes and other areas are below the statistical averages. Now why does this occur? This occurs because consistently the rainfall keeps on decreasing. Alternatively, it can be
a question of supply and demand. If we keep on taking more water than the rainfall, it is replenished, then you can have the droughts. There are other two kinds of droughts also which are mentioned in the literature. One is the socio-economic drought. Socio-economic drought is again related to supply of certain items related to water scarcity. For example, in Uruguay, what happened that the energy production was dependent on the flowing stream or flowing water. There, then the energy production stops, and this can be for fish or other activities also. This is called socio-economic, that the ecosystems are stressed, and these can have multiple effects. In nature, the hydrosphere, atmosphere, biosphere, lithosphere, pedosphere, all are related, and drought affects because of the events which are interconnected with each other. Now, if you see the Indian agriculture also, if you see in case of hydrological drought, is dependent on the monsoons. If there is a poor monsoon, then you have the possibility of drought. If there is a very good more rain, you can have floods. Normally, you must have seen reports of droughts occurring in Rajasthan, in parts of Gujarat, in parts of Andhra Pradesh, some parts of Karnataka and Odisha, etc. So these are related to the monsoon events. Then developing countries face higher risk than the developed countries. It is not that developed countries do not face the risk. For example, this year in Europe there was a lot of heat waves, and in Italy they faced drought-like situations in some areas. Of course, Australia also faces drought. Even US in certain places like California also they had drought-like conditions. So drought has no geographical boundaries. It can occur anywhere. The condition is that if we take more than what is replenished by nature, then it results in drought. Then it can lead to several social issues like food insecurity, famine, etc. And this can lead to mass migrations, and these have happened in the past. Now the next one, what are the natural causes? Dr. Sushmita asked, what are the causes? Causes can be natural, they can also be man-made. If you see the natural causes, it is because of the weather patterns, because weather contains the amount of moisture, heat in the air, land and sea. The distribution of this determines whether there will be a drought or not. Now, if you see oceans, 70% of the surface of the earth is made up of oceans, and oceans control the weather circulation patterns. And it is very important that ocean temperatures have to be understood. Climate change is a very serious issue. If we do not take act, then as it has been reported of the drought and the causes for the drought formation with very good examples and case study for easy understanding. So now we come on to the impacts and the consequences that droughts can have on the environment and on the human beings. So droughts can cause significant damage to the local economy, and they can also lead to secondary effects like famine, like war, as Sir has explained. It also can damage an entire ecosystem and also the agricultural productivity. So when the agricultural sector is entirely affected, there will be no crops. The crops, because the land becomes barren, it becomes dry. So there will be no soil fertility. And then again there will be problem for the decreased carrying capacity for the livestock. So there again you find that there is no vegetation, and then the people are not having the food in order to grow. That is, the crops are not growing, the food is not being produced, and that leads to some kind of malnutrition, and people are forced to migrate from one region to another. Now, they significantly impact the environmental, the agricultural, the human health and the socio-economy of a region, and this definitely varies according to the vulnerability. Now, the water quantity and the water quality can also be reduced because of the low water flows. If there is any pollutant or any pollution that is going on over there, so that will not be getting diluted properly. So hence you can see that the water supplies also get contaminated due to the result of the drought. So the water pollution and the quality of the water is reduced when there is a drought which is occurring. Health effects. So in this picture, if you see, there is a boy, he is sitting, and you find that he is completely emaciated, and his ribs and the bones are seen. So this is a form of
protein deficiency, and it is known as kwashiorkor. So in many of the drought affected regions we find kwashiorkor, and the people are also having the other forms of malnutrition, dehydration, then they have mental illnesses, anxiety, depression, then waterborne illnesses, and also the vector-borne diseases like ticks, which are transmitted by the ticks or the mosquitoes, the African sleeping sickness, then the Chagas disease, the Kala Azar. There are so many vector-borne diseases, and especially you can find them which are totally in certain continents alone. So this kwashiorkor, this is also referred to as an edematous malnutrition because of the fluid retention in the body. Especially if you see the person, the entire body will be emaciated, but there will be a fluid retention or accumulation of the fluid, especially in the belly, that is in the abdomen, in the feet, and also in the ankle. So these are some of the health effects that have been observed by scientists. The famine in Ethiopia, this which occurred from 1983 to 85, here there were prevalences of kwashiorkor as well as marasmus. Marasmus is also another severe condition. It is a malnutrition which is characterized by energy deficiency. Coming on to the ecological effects. So often you would have traveled to desert and the desertification where that has taken place. So here you would have seen that the ecology, the ecological thing is completely different over there. But when we are talking about droughts, the soil is compacted, you find that the ground is dry, there are cracks, so the entire vegetation can be lost. And wildfires can also erupt over there. And this can completely erode the landscapes. So dust storms can also occur, and these dust storms can also transmit certain infectious diseases from one person to another. It will also result in decreased crop growth and also a decreased carrying capacity for the livestock. Now this photo, if you see, this is that of the dying trees which are observed at Griffith Park in Los Angeles in California. So this occurred when there was a drought-like condition and wildfires erupted. So like this, entire ecosystems can be damaged, like the pine forest near the Los Alamos in New Mexico. So this was completely devastated. In 2002, the pine trees, they started losing their evergreen foliage, and 2 years later, even they lost all the needles. So that is the impact that drought can have, and the plants start dying at a very fast rate. Certain plants, like for example even the desert plants, they have adapted themselves to suit these needs. So they are able to grow even without the water, and they can withstand long periods of water. Some examples are the yuccas, the cacti, and some of the mosses. So yuccas have the deep root systems, that is their roots are so well developed that they can go in search of the water systems. The cacti have spiny and the hairy spines and also spikes that will limit the water for loss to evaporation. In the same way, mosses can also withstand a high amount of the complete dehydration. This pictures that you see, that is of the yuccas in the Pine Creek in Creek Canyon. What are the environmental impacts that have been observed? So here in this figure, you can see the pine tree, the ponderosa pine, and also the Douglas fir trees. In 2011, this Las Conchas fire which occurred in the Jemez Mountains in New Mexico, this was completely devastated by the wildfires. So the wildfires have devastated many of the vegetations and the animals' habitats, and the mangroves also have been devastated. So the mangroves, let me tell you, they are the protection. They offer protection for the coastlines, for the shorelines, and they prevent from soil erosion and so on. So they prevent the communities that are staying there also. But the largest recorded mangrove dieback also occurred in Australia when they suffered from the droughts. So you can see what are the very serious consequences that drought can have on the people, on the economy, and also on the environment. And that is why this is really a topic of importance, and the United Nations is also taking a lot of efforts in order to combat the desertification. Drought can also create significant socio-economic impacts and problems, and for example, low water for irrigation. So this will affect the food productivity, and then people are forced to import their food from other countries. In the same way, there will be mass migration of people from one region to another. So there is a form of internal displacement. Then there is shortage of water for the industrial users, and small disputes or even the disputes that occur over the natural resources, that also occurs, and these are some of the socio-economic problems and social unrest which is observed. The human impacts.
Of course, crop failure and the failure to produce the food that is required for the livelihoods for the people, for their sustenance, and with the fewer crops and the water restrictions also being enforced, then we definitely have some form of a food crisis. There have been some historical droughts. That is a northern Chinese famine which occurred from 1876 to 1879. This was led by the drought-induced crop failures which began in 1875, and millions, like 9.5 to 13 million Chinese, people died in China as a result of this drought. The Dust Bowl, this was again another significant severe dust form which greatly damaged the ecology and agriculture of the American and the Canadian prairies in the 1930s. Here again, this drove 2 million people off the land, and several infectious diseases, including the fungal disease that is known as the valley fever. Then the dust also carried measles and influenza and transmitted them from one person to another. So the Dust Bowl also served as a form of an infectious disease transmission. Then in 1984 and 85, the Horn of Africa, this also faced a lot of drought, and the Horn of Africa comprises of the countries Eritrea, Ethiopia, Somalia and Djibouti. So here 80% of the population is rural and they depend on agriculture for their survival. So here again they were hit severely by the drought conditions. So the United Nations estimates that in Ethiopia alone, 1 million people died and 15 million livestock died, and 8.7 million people were affected by the drought, including being hospitalized during those days. Now in India also, the drought has been occurring and it has resulted in 10 and millions of deaths right from the 18th, 19th and the 20th centuries. So the 18 meteorological and 16 hydrological droughts have occurred in India in the time span between 1870 to 2018. The Indian agriculture is heavily dependent on the country's climate, which is a favorable monsoon also, in order to get the water for irrigating India's crops. In the same way, we have had other droughts also, like those which occurred in Australia. The responses to the drought was that the state and the territory governments, they signed the National Drought Agreement to find ways in order to help the farmers combat the drought conditions and recover from the same. And they invested in the desalination plants, which could actually convert the seawater, the saline seawater, into safe drinking water. Then Perth, a city which is on the west coast, that is pumping 10% of its treated wastewater underground, and the rocks that are beneath the ground, they naturally filter and store the water so that it can be used again. Also, they saved water by using the aerated devices like the aerated taps, the shower heads, used recycled water, and they also collected the rainwater in order to water their gardens and also to wash their cars. So these are some energy efficient technologies. Now coming on to some technologies, urban water conservation and efficiency. So we have to be mindful about the amount of water that we use every day and adopting the landscape designs and the type of the plants. For example, drought tolerant plants can be used, and also attending to some leaking taps and pipes. Water recycling can be processed in the several sectors. Agricultural water conservation. Now here the crop rotation, then the no-till farming for minimal soil disturbance, and also the cover crops can be used for the agriculture. And the world's crops, they are going to require trillion cubic meters of water, for agriculture and cultivation of the crops. And if you see, rice is being grown in many of the countries. It is a staple diet of the people. So scientists are now going on for the climate resilient varieties and the drought resistant staple food and the rice which can be grown by using very little water. Otherwise, rice is actually, it has got an extraordinary thirst for water. The UN Convention to Combat Desertification in 2006 was an international treaty that aims to promote the effective action through innovative and local programs and international partnerships, and more than 1 billion will have little access to water by 2030, and the demand will also increase further. This can also displace 700 million people by 2030. Therefore, land degrading practices should be discouraged and we should go on for sustainable practices.
Finally, combating desertification and drought is very important. The General Assembly adopted the Convention to combat the desertification, linking environment and the Sustainable Development Goals to sustainable land management on the 17th of June. And it is observed on 17th of June annually, and it is normally, we conduct some programs in order to conduct certain create awareness on land degradation, restoring the soil productivity, and also address the drought mitigation. So my dear viewers and learners, today we discussed about droughts, the causes of the droughts, and the impacts and the consequences that droughts can have, explaining the same with the help of a few case studies and that which have occurred in the history. I hope you have had a good understanding of the same. Thank you for your patient listening. Thank you. Thank you. Indira Gandhi National Open University, accredited with A++ grade by NAC, provides you a quality education in open and distance learning. School of Performing and Visual Art is offering a wide range of programs in performing and visual art. Certificate program in painting, certificate program in applied art, certificate program in Bharatanatyam dance, certificate program in Hindustani music, Carnatic music and theatre arts. बहुत यत्न करने के बाद भी नहीं पा सका, संजोग से मैं इस बार लेके आया हूँ. All the certificate programs are of 6 months duration with 16 credits. We offer 1-year diploma in theatre arts with 10+2 eligibility criteria of 32 credits. The learners are exposed to various aspects of elements of drama, theatre games, acting techniques, scene work procedures, and they will also have the opportunity to take part in a classroom play production. We also offer bachelor's degree in Hindustani music. This program is duration of 3 years, and learners are having the flexibility to complete this program over a period of 6 years. Apart from bachelor's, we also offer masters in drawing and painting with a duration of 2 years. Apart from certificate programs, degree, masters, we also offer PhD programs in performing and visual art with a specialization of visual arts, music, dance and theatre. Art is the perfect manifestation of every human being. So what you are waiting for? For online admissions, please visit our website www.ignou.ac.in. For more details, you can also contact Director, School of Performing and Visual Art, Block number 15G, IGNOU, Maidan Gadi, New Delhi. You can also reach us at sopva@ignou.ac.in. Happy learning! आश्रम के चूहे पकड़े, तुम तो सचमुच राजा लगने लगे। पता नहीं। Hello viewers, today's topic is about Russia-Iran relations, recent visit of Russian President Vladimir Putin in Tehran. You know why this visit is very significant today in international relation, especially there is a flashpoint in ongoing war in Ukraine,
despite the Ukraine war is there, in between the war, Russian President Vladimir Putin planned to visit its border country, Iran. Iran, which is the very sensitive country, the last 20 and 30 years, especially 1979, if you look at the history, political system of the Iran, but they have the very good relations with the Russia. There is also some geopolitics in the West Asian countries in the view context of the Indian perspective, or we can say in the world view, the Middle East. Before there, there is Americans' economic sanction on Iran. Despite these facts, Vladimir Putin visited the 4th week of July to Tehran. It is the bilateral summit, but one interesting thing is there. He also called Turkish President Erdogan to come Tehran. So let's see what happened during the visit, why this visit is very important due to the ongoing crisis. You know that there is a lot of crisis in Afghanistan is there, Pakistan is there, and many more things happens in West Asian countries. So that's why, also including Central Asian country. So that's why this visit is very important in the context of the international relations, foreign policy, and the world politics today. If you look at Russia-Iran relations, they are the strategic partner. They are the strategic ally in 21st century in international relations of the global politics. We can say the time of visit is very important. There are a lot of rumors against Russian president, but he visited here, the second foreign trip since launch of the invasion of Ukrainian, or we can say Russian aggression in Ukraine in February 2022. Iran rolled out a long red carpet for President Putin at Tehran's Mehrabadi airport, where Iranian oil minister Javed Uweji greeted him formally before he whisked into his presidential convoy to the city in the last month. This visit became the new response. If you recall that day before this visit, day before President Putin arrival in Tehran, American President Joe Biden also arrived in Saudi Arabia. There was a visit by American President day before arrival of President Putin in Tehran. We know there is a direct conflict between Saudi Arabia and Iran. Iran is a Shia country. Due to the regional geopolitics, regional cooperations, regional conflicts, these visits mattered. There is also a lot of agreements on official military exercises, military agreements, transfer of weapons. Western crying for this visit for President demand Iranians weapons to use in Ukraine war. If you look at this map, it shows that whatever the geographical condition of the Soviet Union, or especially after the post-Soviet Union, the Russia today and the Iran, before the collapse of the Soviet Union, they were the neighbor. Persian Gulf is there, Caspian Sea, Persian Gulf to the Caspian Sea. They have the direct link with the energy resources along with geopolitics of the whole region in Central Asia, Caucasus, Eastern Europe to the West Asia. So here the greetings each other, Iranian President Ibrahim and President Putin in Tehran.
strengthening whatever the objective of this visit was, strengthening partnership, overlapping security interests, bilateral, regional, and the global level. Tehran has pursued a regional policy program that is largely in line with the Russia's interest, whether related to the Syria. We know during the Syrian crisis in 2011, Russia and Iran have the common objective there, Caucasus, Central Asia, or Afghanistan. This year also in mid of April, there was the toppling of the democratic government. Iran and Afghanistan also share border, so there is also security threats for Iran. China also involved, America also involved. America but say bye-bye to the Afghan territory. But day before yesterday, you know, one of the Al-Qaeda's top mastermind was killed by the American drones on the basis of the information provided by the Kabuls. But we don't know how that they killed the Al-Zawahiri, one of the mastermind of the Al-Qaeda. It is the President Joe Biden claimed. So a lot of regional factors, regional security, radical Islamist, fundamentalisms, oil resources, many more things are the part of the cooperations in spite ongoing Ukrainian war. We can say Iran is also facing a lot of economic sanctions from the Western, especially US and European countries. There was the nuclear deal, it was the failed. Tehran is the new approach to strengthen economic links with the regional level. Russia and the European Economic Union, Eurasian Economic Union, where President Raisi said increasing the volume of trade with the Russia and finalizing the comprehensive document of the Iran-Russia cooperation soon as possible. So both sides ready to engage wide of ranges of bilateral, regional, international issues involving trade, energy, security, and mutual cooperations. If you go through the historical context, why this relation is very important today, but before 79, there is a Russian-Iranian revolutions in 1979. Before, there is a very good relations with the Iran and Soviet Union. We know Iran is a Islamic theocracy, where Russia is a secular authoritarian state with Orthodox Church, traditionally serving a junior partner of the Kremlin. Both leadership and society is highly nationalistic, sensitive to their previous or past glory, determined to regain their status in global and regional context. After the breakup of the Soviet Union, Iran has remained Russian neighbors across the Caspian Sea, with the 25 years of the mostly unbroken statehood. Iran is virtually a permanent fixture in the otherwise highly volatile environment south of the Russian border. So we can say, after the post-Cold War or post-collapse of the Soviet Union, Iran trying to maintain a very good relations with the Soviet Unions, still a permanent border with the Central Asian republics. It is the former Soviet republics. Russia outreach to the Iran, the major Muslim country, it is important for bolstering Moscow image as a friendly to Islam, open to dialogue and civilizations, dialects of civilization. This concept was also favored by the former Iranian President Mohammad Khatami and supported by Kremlin as the part of make the global order more multipolar. That's why this visit is very important right now. If you go through the bilateral cooperations, what is the urgent basis, what was the history of the bilateral cooperations, it also signals very good positive response for the mutual cooperations, mutual security regional cooperations. That's why Russia advocates for Iranians membership in Shanghai Cooperation. India is also already membership. Pakistan as well as Afghanistan was the dialogue partner. Sri Lanka and most of the
Central Asian countries, Shanghai Cooperation. It is the Chinese-led regional cooperations to connect new regionalism, connect South Asian country with the Central Asian countries. So it is the Russia who supported Iranians' membership here. If you look at the other regional context of the cooperation, economic, culture, security, terrorism, many more things there. Russia treats cooperation with Iran one of the measures to stabilize the situation in Caucasus and the Central Asia. Another dynamics we can say, Moscow trying to developing close cooperations with Russia, Iran, Armenia, that is the triangle that limit Azerbaijan options, creating north-south transport corridor. That is very important for economic and trade, energy links between Europe, Russia, Central Asia with the West Asian countries, Iran. Another factor was the TAPI, where India also trying to connect the pipeline, bring the Turkmenistan energy resources, Central Asian energy resources to the India, but still it is the pending due to the many geographical factors, and also one factor is the Pakistan is also there. So if you look at the pipelines, Russia and Iran have the common products to sell the world market, that is the oil. But they have the mutual cooperations, bottlenecks. If you look at this map, 11 oil pipeline project is there, 6 are operationals, 6 natural gas pipeline project is also there, like the CPC, BTC, TCP, where Russia and Iran are working together to access energy resources of post-Soviet space. In the Caspian Sea regions, Russia-Iranian relations is important to mixture of the cooperation and rivalry. And sometimes you say there is a lot of engagement, disengagement, there is a divergence and convergence is also there. But we can say they have the one objective, trying to limit the Western influence in the region, including military presence and also in the energy sector. That's why Iran trying to divert its energy to the China, second side to the Russia. India was there, but it is still pipeline. Let's see when would be completed. There is also, they have been opposing the construction of the sea bottom pipelines connecting Kazakhstan, Turkmenistan with Azerbaijan. So if you look at new approachment, why this relations important today, what kind of the factors determined, it is the geopolitics or geoeconomics or energy resources of the neighboring countries or inside Iran, Central Asian republics, Armenia to almost we can say the post-Soviet space. Iranian foreign policy is the emphasis principally because Iran has the different systems, political regimes, but they supported each other. If you look at the presidency of Ibrahim Raisi, who took power in August 2021, he indicates that we determine the idea of the supreme leader Khomeini since 1989. We need Russia as a friend in today's world because both are against the Western intervention in this region. So both countries advocates for reapproachment stressed to common oppositions to the US policy in this whole region, either Middle East, Central Asia, South Caucasus, or you look at the Ukraine, it is already there is a tug of war, or there is a one side Russia is there, second side is the NATO countries.
Ukrainian President Zelensky trying to get the membership of the European Unions, also military help from the Western countries, especially Americans. So we can define these relations in the different phases of history. Why, what kind of the situations, how these relations move toward the point of convergence and divergence. But still, they have the Moscow has a very important place for the Tehran, and similar fashions. Iran also would like to enhance cooperations with the Russia. So we can say that you can classify it in the 4 phases in distinct phases, the 1979 to 89. You know, this is the Cold War period where it is the Soviet Union. But Soviet Union leaders supported Ayatollah Khomeini, both past and present. But there is a coin word by the Ayatollah Khomeini. He said, United States is the great Satan, but whatever he said about the Soviet Union, it is the lesser Satan. An atheist ideology doesn't matter whatever the comment is there, but recent light they move towards these kinds of the diplomatic disengagement, or we can say there is a lot of challenges at times. So they consider that we have to non-alignment with the either Soviet Union or American alliances. But right now, they have no any objections. They move towards the strategic partnership in the 21st century. After the post-Cold War, the second phase is there. You know that there is a very toughest period for the West Asian countries, where Iran-Iraq war was there in 1988. Khomeini died in mid-89. Soviet Union withdrew from Afghanistan in 1989. So a lot of events happened. The border of Iran, one side, Soviet invasion in Afghanistan, second side, Iran-Iraq war was there. Communism is there. In Eastern Europe, it was collapsed. So many incidents happens that determine the Iranian-Russian relations during the Cold War. But post-Cold War, a lot of dynamics have changes, international politics, society, even then Russian status is different before the Cold War and after the end of the Cold War. So we can say this is the third phase fluctuated, where antagonisms and the friendship. It began shortly after the Vladimir Putin's resumed office in 1999. Putin publicly reputed Gore-Genuddin agreements in 2000, which announced that the new arms sale to the Tehran. So this is a very surprise movement, the agreements, the military equipment sale to the Tehran by the Russia. Russia also committed to completing the Bushehr's reactors, nuclear reactors, in March 2001. Mohammad Khatami became the first Iranian president to visit Russia since 1979 after the post-Islamic revolution. So a lot of changes happens. In 2005, Moscow welcomed the election of the Mohammad Ahmadinejad, Iranian new president, expecting that his hardline and anti-American view. Russia repeatedly pushed the dilute or defer the series of UN sanction resolution against the Iran since 2006, because most of the these economic sanctions or military sanctions by the Americans and then its allies. We know Iran is against the American policies, American interventions, but we know 2003 there is a direct intervention Iraq attack, the toppling the Saddam Hussein government is there. Phase 4, if you look at post 2013, very good time for Iranian and Russian relations, where President Hassan Rouhani and onset the much more serious negotiations for the nuclear deal
along with the world's 6 major powers over the nuclear issue. Moscow 2015 announced that it would permit the sale of S-300 air defense missiles to Iran. So it was the very big decision by Russia for Iran. If you look at the recent visit, President Putin in Tehran, Russia, Iran has been valuable geographical and geopolitical ally in a number of areas, including Afghanistan, Syria, southern area of the former Soviet Unions. This is the pictures which clearly show that what kind of the cooperations, friendship between President Putin's, Ibrahim, Iranian president, and Turkish presidents. So this trip is very meaningful for all countries, domestic audience for Russia as well as the Iranians. Whatever the isolation for the Iranians, it break the new barriers to deeper cooperation with Russia. We can say Iran is the center of one of the, we can say the foreign minister of Iran say, Iran is the center of dynamic diplomacy. Iranian foreign minister Hussein Amir-Abdollahian wrote on Twitter about develop economic cooperation, focus on security of the region, and ensure food security. That's why food security matters, because during this Ukrainian war, the grains supply to the others has been stopped by the Russia. In conclusion, we can say Supreme Leader Khamenei's strategy to pursuing strategic alignment with the Moscow in the security domain has been welcomed by various factions in Iran. Russia close relations with Iran have bearing Moscow ties to Israel, but while its link with the number of Arab countries above the Persian Gulf, Russia's ability to stay close with both Iran and Israel. This is the testament of the degree of Moscow's foreign policy flexibility, the quality of diplomatic skills, and inherent limit of Russian-Iranian cooperations. Finally, I say, Moscow-Tehran needs each other in order to accomplish their wider goals and objectives. It is the need of the hour today, where Iran needs a friend against the USA. China is also there, but India is also part of this whole regional security cooperations, the factors. India also developing the Char-Baha with the support of Iran's. Lot of factors are there. There's India-China relations, India-Russia relations, Iran-Russia relations, in Iran, China relation, Iran, Pakistan, Afghanistan, with the whole regions is unstable right now due to the flashpoint. Recently, it happens. So, we can say President Vladimir Putin visit is positively remarked and welcomed by Iranian presidents and Turkish president in Tehran. Thank you.